Hello everyone, I am Siddharth Mittal and today I welcome you all in this series of ultimate analysis. Today's topic is related to Western disturbances in India, and this topic is a very important topic as far as physical geography is concerned of your GS paper 1, and also this topic is related with the present trends of climate change that we are observing in the Indian subcontinental region. And this topic is also important to understand the rainfall pattern which take place in the winter period. And this topic is also important to understand the hydrology of northern India and the factors controlling the hydrology of the northern India. So in this topic, as the name is very much clear, from the name it is very much clear that it is related to Western disturbances in India, and this topic is sometimes very much misunderstood by the people who are studying geography, and not only in the GS part, but I have seen that the people from the optional background also, they also miss the critical concepts in this topic of Western disturbances in India. Now, today I am going to start this topic with the very basic fundamental, but for this I want that everyone should participate in the discussion because this is a live session and I do not want to have a monologue type of a discussion out here, and I just want that every one of you should participate in this session, and in case if you have any doubt you can ping me, and because your message box is open in front of me, so I can see it, and then I will try to discuss that. In case if you have any doubt, then I'll try to discuss and try to resolve your queries. Now, Western disturbances in India, that is the Western disturbances in India. Now, before going into the details of Western disturbances, I just want to ask some basic questions from you. Okay, in your opinion, when we are studying any topic in geography, okay, what we are expected to study? What we are expected to study? Now, let's take this topic, that is Western disturbances. Let's take this topic, that is Western disturbances, and just a minute, guys. Let me arrange something, that is Western disturbances. Just a minute. And Western disturbances. Now, by the name it is very much clear, with the name also it is very much clear that Western disturbances, okay, means something coming from the west or influenced by the west or influenced by the west, and disturbance means, the meaning of the disturbance means anything which is creating a change in stability. A change in stability, that is called to be as a disturbance. Now, we have a specific meaning of a disturbance in meteorology, and also in geography also we have a specific meaning of a disturbance, and generally, but before starting and going into the technical details of the meaning related to the Western disturbances, I would like to say that you start with the very basic meaning, which may not involve the jargon of terminologies of the subject. Whenever you are going to study any topic, और जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसके बेसिक मीनिंग से स्टार्ट करिए। बिल्कुल जो बेसिक मीनिंग है वहां से स्टार्ट करिए, और ऐसे स्टार्ट करिए कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, और धीरे धीरे करके अपना एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है उसको क्रिएट करिए। क्लास हम दोनों बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों में रखेंगे। हालांकि मेरा टीचिंग का मीडियम इंग्लिश होता है, बट because on this YouTube I have seen, on this channel I have seen that many Hindi medium students are also getting connected with us for a good matter and for a good lectures.
एंड देयरफॉर आज की क्लास हम दोनों मीडियम में रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। हाँ, इसमें जो हम टर्म्स यूज करेंगे वो इंग्लिश में ही यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी की टर्म्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और मेरी भी कंफर्टेबिलिटी उन हिंदी की टर्म्स को लेकर लिमिटेड है। तो इसलिए जो हम टर्म्स यूज करेंगे वो सारी की सारी इंग्लिश की ही यूज करेंगे, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन दोनों मीडियम में रखेंगे। वी विल ट्राई टू मेंटेन द एक्सप्लेनेशन पार्ट in both the medium, both in Hindi and English. Okay, and in case if you have any problem and in case if you have any doubt, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो मैसेज डाल के आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं मुझसे। So before going into the details of the western disturbances, let's try to understand the very basic one, a very step one, level one understanding that western disturbances are something which is influenced by the west, or disturbance means something which is a change in the stability. Now this western disturbances, I tell you, nowadays are getting important for multiple reasons. I have discussed with you, nowadays getting very much important for the multiple reasons, because for the last 2 or 3 years we can see that the frequency of the western disturbances are increasing, but the rainfall that they are bringing into the northern part of the India is not sufficient enough. And that becomes to be as a news making event for the last 2 or 3 years. We are not experiencing such a good scale of rainfall distribution as a result of western disturbances, and therefore it has become to be a cause of concern. एक चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के माध्यम से, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से कई हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में राबी की फसल उगाई जाती है, राबी जिसमें इंपॉर्टेंट जो हमारी क्रॉप आती है वो वीट आती है, उसको सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिल पाता, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कम होने के कारण जो हाइड्रोलॉजी है, यानी कि जो हमारी नदियों के अंदर में भी जो हमारे पानी पहुंचता है, जो स्नोफॉल के मेल्टिंग से जो पानी पहुंचता है, उसके भी जो रिवर रेजीम्स हैं जिसको कहा जाता है, या फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर जो है, उस पर भी समर सीजन के अंदर में जाके फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए आजकल बड़ा ये न्यूज में रहता है और बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको डिटेल के अंदर में समझें। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में अगर हम बेसिक से स्टार्ट करा, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और द डिस्टर्बेंसेस कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। नाउ व्हाट आर दे? दे आर द डिस्टर्बेंसेस, एंड for disturbances in climatology, there is a separate word which we call to be as a cyclone. There is a separate word which we call to be as a cyclone, and there are many other names also related to the cyclone. The disturbance can be called to be as a depression. Sometimes the word depressions are used. Sometimes the word depression is used. Okay. Or sometimes the word low pressure system is used. Low pressure system is used. Sometimes this word is used, and sometimes depression, or sometimes a word cyclone is used. Or in the case of western disturbance, not only in terms of all the disturbances, especially in the case of western disturbance, there is another word which is used, that is called wave depression. Wave depression. Okay, and always remember that this is not a one disturbance which comes. This is not a single disturbance which comes. It comes, you can call it to be as a disturbances, and therefore these disturbances comes in a family. These disturbances comes in a family, or you can call them to be as a family of disturbances. Family of disturbance. Family of disturbance. Okay, so this is what we call in terms of a disturbance. For in a climatology or in meteorological terms, there are different names for the disturbance. You can call it to be as a cyclone, you can call it to be as a depression, you can call it to be as a low pressure system, you can call it to be as a wave depression, or you can call it to be as a family of disturbances. These are some of the terms that you can use in the case of understanding the western disturbances. Now the question arises, what are western disturbances? What are western disturbances? Now western disturbances
as I told you that they are cyclonic rainfall. They are cyclonic rainfall, or you can also call it to be as a non-monsoonal rainfall. Non-monsoonal rainfall. This is a very important word, that to call it to be as a non-monsoonal rainfall. Now, non-monsoonal rainfall driven by westerlies, in northern India, and bringing precipitation in terms of snowfall and rainfall. Okay, I hope this definition is very much clear, that what is the western disturbance. Whenever you are writing the answer related to the western disturbance, these are this term, cyclonic rainfall and a non-monsoonal rainfall. Always remember that it is not a monsoonal rainfall, because in the context of the India, you see that we have two types of the rainfall that we generally experience in a year. One is called to be as a monsoonal rainfall and another is called to be as a non-monsoonal rainfall. Now, दोनों में डिफरेंस क्या है? मानसूनल रेनफॉल और नॉन मानसूनल रेनफॉल के अंदर में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि हम मानसूनल रेनफॉल हम तब कहते हैं जहां पे पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ द विंड्स है, मींस वेयर वी हैव अ पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ द विंड्स, मींस द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स रिवर्सेस आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, then it is to be called as a monsoonal rainfall. But when we do not find any reversal in the wind direction, something come and go, okay, it do not show a sign of retreat or it do not shows a sign of opposite direction, then it is to be called as a non-monsoonal rainfall. Okay, now both the types of the rainfall are important. Reason being, because in India we experience most of the rainfall during the southwest monsoon, but into the northern part of the India, this western disturbances brings the rainfall and a snowfall into the mountainous region, and in the regions of the Punjab, Haryana, Western UP, they experiences a rainfall, and this rainfall is important for the cultivation of wheat, especially in this wheat belt. So in any year, if we have a lesser precipitation, or in any year if we are getting a lesser rainfall, then it is going to influence the harvesting of the crops, or it is also going to influence the agricultural production related to the rabi crops. Okay, so this is going to be a very important one, and these western disturbances for the last, because they are the newsmakers now, because just recently government has also established a committee to study about the impact of climate change on the western disturbances, then how this climate change is influencing this western disturbances into the northern part of the India. Okay, so before going and understanding the further details related to the western disturbances, the first step is to start with a definition, and your definition should be always substantial. ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी definition को लिखते हैं या कोई सी भी चीज की definition से जब आप स्टार्ट करते हैं, तो इस definition में ज्यादा से ज्यादा elements incorporate हों, और साथ ही साथ definition जो होनी चाहिए वो simple होनी चाहिए. ओके, डेफिनेशन सिंपल हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बातें जो हों उस डेफिनेशन के अंदर में आपने कवर करी भी होनी चाहिए. Okay, so this is what are western disturbances. Western disturbances means that they are the cyclonic rainfall, or you can call it to be as a non-monsoonal rainfall driven by westerlies in northern India and bring precipitation in terms of a snowfall and rainfall. Okay guys, now come to the next one. I said in this case, I said that cyclonic rainfall. Cyclonic
रेनफॉल, मैंने एक वर्ड यूज करा है साइक्लोनिक रेनफॉल, आई सेड, okay, this is the word I have used. Now how the cyclones are possible, because general हम क्या होता है कि साइक्लोन्स को हम जनरली ये समझते हैं कि समुद्र के किनारे ही साइक्लोन्स की बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन साइक्लोन्स जो होते हैं वो जनरली हम साइक्लोन्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि आप साइक्लोन की बात करेंगे तो केवल आप समुद्र के किनारे के रीजन्स या जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उन्हीं की बात करेंगे। जनरली साइक्लोन्स क्या है, लो प्रेशर एरियाज है, लो प्रेशर एरिया। साइक्लोन्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, लो प्रेशर एरिया, ओके। अब ये लो प्रेशर एरियाज जो होते हैं वो दो जगह आपको देखने को मिल सकते हैं, एक तो ट्रॉपिकल रीजन्स में, यू कैन फाइंड देम इनटू द ट्रॉपिकल एरियाज एंड देयर वी कॉल इट टू बी एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, देयर वी कॉल इट टू बी एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, वी कॉल इट टू बी एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड अनदर वन that we find in a temperate region, in a temperate regions, और टेम्परेट रीजन्स कौन सा है, कोई जल्दी से मुझे मैसेज ड्रॉप करके बताए टेम्परेट रीजन्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टेम्परेट रीजन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन कितने एरिया के बीच के एरिया को हम टेम्परेट रीजन्स कहते हैं। बच्चों पार्टिसिपेट करोगे तो मैं बहुत अच्छा आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं हो सकता है मुझे ये लगेगा कि शायद आपको आता है, ओके। तो मुझे अगर आप कोई मैसेज ड्रॉप करके या कुछ भी आप ड्रॉप करके अगर आप मुझे बताते रहेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर मी, ओके। सो कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेज सो दैट आई विल बी अवेयर अबाउट कि वेदर व्हाट आई वांट टू डिलीवर or whether the things which we are delivering here is relevant for you or not, okay, or you want to ask something different than what we are going to discuss here. So this is the ultimate analysis series, and we will be having a 360-degree coverage of western disturbances. Okay, we'll try to have a 360-degree coverage of the western disturbances. And before going into the details of the western disturbances, we have started with the basic meaning of a western disturbance. So we have seen that the western disturbance means something coming from the west, and the disturbance means something disturbing your stability. Okay, something disturbing your stability. And in terms of meteorology या meteorological terms के अंदर में, the word that we use for a disturbance is a low pressure area, or another word that can be used for a disturbance is a depression, or another word that you can use for a disturbance is wave depressions in the case of a western disturbances, or the another word that you can use is a cyclone. Okay, now what are cyclones? Cyclones are the low pressure areas, and generally you find the low pressure areas taking place in two parts of the globe. One is in a tropical area, one in a tropical area, and I hope you aware about the tropical area. You can take a extent of the tropical area or extension of the tropical areas between 0 degree to 32 degree north and south latitude. That is going to be the extension, but प्रिंसिपली अगर हम देखें और अगर हम सैद्धांतिक तौर पे देखें तो ट्रॉपिकल एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पहुंचा जाता है, लेकिन ट्रॉपिकल का इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड ले लिया जाता है, इसलिए कई बार एक्सटेंडेड रीजन्स को हम वार्म टेम्परेट रीजन एंड कोल्ड टेम्परेट रीजन्स के फॉर्म में कर लेते हैं, ओके। बट ये जो टेम्परेट रीजन्स हैं, ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर में साइक्लोन्स बनते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वर्ड यूज किया जाता है, और जो टेम्परेट रीजन्स के अंदर में साइक्लोन बनते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है टेम्परेट साइक्लोन्स। The word that we use is a temperate cyclone. Okay? अब ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनका ओरिजिन थर्मल होता है, दे हैव अ थर्मल ओरिजिन, दे हैव अ थर्मल ओरिजिन। ऐसा नहीं होता कि ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन्स में थर्मल साइक्लोन्स नहीं बनते हैं, टेम्परेट रीजन्स में भी थर्मल साइक्लोन्स बनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थर्मल साइक्लोन्स जो होते हैं टेम्परेट रीजन्स के अंदर में क्रिएट नहीं होते, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनमें थर्मल साइक्लोन्स ही जनरेट होते हैं। थर्मल साइक्लोन्स उनको कहते हैं जो हीटिंग ऑफ द लैंड से क्रिएट होते हैं या हीटिंग ऑफ द सर्फेस से जो क्रिएट होते हैं, और जनरली ये साइक्लोन्स ट्रॉपिकल एरियाज के जो साइक्लोन्स होते हैं वो ज्यादातर या in all cases you will find that they are originated over to the sea, यानी कि ट्रॉपिकल सीज, और इनके अपने एक सीजन्स होते हैं। जनरली ये हर टाइम पे नहीं डेवलप होते, जिनके अपने सीजन्स होते हैं, और जब सी सरफेस टेम्परेचर्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करने लगता है
तब बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन शुरू हो जाता है, जिससे एयर हल्की हो जाती है और हल्की एयर होके वो राइज करने लगती है और उन जगहों पे लो प्रेशर सेंटर्स बन जाते हैं। बहुत सारे लो प्रेशर सेंटर्स जो होते हैं आपस में क्लब करके एक बड़ा लो प्रेशर सेंटर जो होता है उसको क्रिएट कर देते हैं और ग्रेजुअली वो एक साइक्लोन की फॉर्म में डेवलप होने लगता है। तो इसलिए ट्रॉपिकल एरियाज के जो साइक्लोन्स होते हैं उनको थर्मल ओरिजिन्स का साइक्लोन कहा जाता है। लेकिन जो टेम्परेट रीजन्स के साइक्लोन्स होते हैं इनको डायनेमिक ओरिजिन कहा जाता है। डायनेमिक ओरिजिन तब कहा जाता है, डायनेमिक ओरिजिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो साइक्लोन्स हैं वो दो डिफरेंट नेचर के एयर के मिलने से क्रिएट होते हैं। जब दो डिफरेंट नेचर की एयर आपस में पास पास आती हैं, यहां पे वर्ड यूज किया जाता है एयर मासेस इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट देम टू बी एज अ एयर। यहां पे एक जो सिंपल वर्ड हम लोग यूज करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में वो कहलाता है एयर मासेस। तो जब दो डिफरेंट नेचर की एयर मासेस एक दूसरे के पास पास आती हैं और व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर देन दे कैन नॉट मिक्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स पढ़ते वक्त ये गलती कर देते हैं कि वो वाटर को तो फ्लूइड मान लेते हैं लेकिन एयर को फ्लूइड नहीं मानते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एयर में भी सारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं और फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है, अगर दो डिफरेंट नेचर का फ्लूइड होगा यानी कि दो डिफरेंट डेंसिटी का फ्लूइड होगा तो वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होगा। तो होगा क्या कि जो कम डेंसिटी की चीज होगी वो ऊपर की ओर जाएगी और जो ज्यादा डेंसिटी की चीज होगी वो नीचे की ओर जाएगी। तो इसी तरीके से जब एक कोल्ड एयर मास और एक वार्म एयर मास दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं तो कोल्ड एयर मास की डेंसिटी ज्यादा होती है और वार्म एयर मास की डेंसिटी कम होती है। तो कोल्ड एयर मास क्या करता है, वार्म एयर मास को ऊपर की ओर उठा देता है। तो इसी एयर के राइज होने से जब भी कहीं पे भी किसी भी जगह एयर नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो हमेशा वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा और जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और इसी एयर प्रेशर के रिड्यूस होने से वहां पे एक लो प्रेशर एरिया जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पे भी मैं आपको फिर बता रहा हूं, कई बार स्टूडेंट्स इस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो मैं इस चीज को दोबारा से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं कि इसके अंदर में एक कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनमें भी लो प्रेशर बन रहा है और इसके अंदर में भी एक लो प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है। लेकिन यहां का जो लो प्रेशर होता है वो थर्मल ओरिजिन पे बेस्ड होता है और यहां का जो लो प्रेशर होता है वो एक डायनेमिक ओरिजिन पे बेस्ड होता है। ओके, हमने इसको क्यों डायनेमिक कहा, क्योंकि यहां पे एयर को जबरदस्ती ऊपर की ओर उठाया जाता है और यहां पे इसको हमने थर्मल इसलिए कहा क्योंकि एयर गर्म होके खुद अपने आप ऊपर की ओर राइज कर रही होती है, इसलिए इसको थर्मल कहा जाता है। और जहां पे दो डिफरेंट एयर मासेस आपस में आके कन्वर्ज होते हैं तो एक एयर अपने आप ऊपर, एक एयर दूसरी एयर को ऊपर की ओर पुश कर देती है। तो जब भी एयर ऊपर की ओर पुश होगी तो हमेशा एक लो प्रेशर बनेगा क्योंकि उस जगह के अंदर में एक वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम की वजह से वहां पे एक लो प्रेशर एरिया जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो साइक्लोन्स होते हैं जनरली हम देखें तो लो एक कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, लो प्रेशर एरिया होगा। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, एक पहला डिफरेंस तो ये आता है कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में जनरेट होते हैं और केवल सी पे जनरेट होते हैं, ओनली ऑन सी, ओनली सी ओनली। और ये टेम्परेट रीजन्स में जनरेट होते हैं लेकिन क्योंकि ये दो एयर मासेस के मिलने से होते हैं इसलिए सी और लैंड दोनों पर ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पढ़ते पढ़ते आप कहां साइक्लोन पे आ गए। बच्चों मैं इसलिए साइक्लोन पे आ गया हूं क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो क्या बताई, साइक्लोनिक रेनफॉल। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं इस साइक्लोनिक, ये एक साइक्लोनिक रेनफॉल है, ये समझ नहीं पाते। और ये साइक्लोनिक रेनफॉल है तो कैसा रेनफॉल है, तो ये एक टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल है, इसको हम टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। और अगर हम बात करें ये ओरिजिन कहां से होता है तो इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये रेनफॉल जो है ये जो ओरिजिनेट होता है वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास, इसका ओरिजिन पॉइंट कहां पे आता है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास इसका ओरिजिन पॉइंट आता है। मेडिटेरेनियन सी एक ऐसा रीजन है, मेडिटेरेनियन सी की अगर हम बात करें तो मेडिटेरेनियन सी के पास डिफरेंट एयर मासेस जो होते हैं, ओके, जिसको हम एक कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास भी कह सकते हैं और एक कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस
या वेस्टर्लीज भी जो होती हैं उनका भी इन्फ्लुएंस होता है। वार्म वेस्टर्लीज होती हैं और कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस होते हैं वो आपस में आके दे मीट विद ईच अदर। ओके, अब ये जो रीजन होता है, दे आर द मीटिंग पॉइंट, मीटिंग रीजन of cold air masses and westerlies, okay, and warm westerlies, because westerlies का नेचर यहाँ पे वार्म होगा। कारण क्या होगा? क्योंकि बिकॉज वेस्टर्लीज आर कमिंग फ्रॉम अ ट्रॉपिकल टू द हायर लैटिट्यूड, तो नेचर ऑफ द वेस्टर्लीज जो होगा वो रिलेटिवली यहाँ पे एक वार्म नेचर का होगा। तो इन रीजन्स के अंदर में जब वार्म वेस्टर्लीज और कोल्ड एयर मासेस आपस में आके मिलते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कोल्ड एयर मासेस होती हैं वो वार्म एयर मास जो होता है उसको ऊपर की ओर पुश कर देती है, और उसी के पुश होने की वजह से वहां पे एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ लो प्रेशर एरिया। और ये लो प्रेशर एरिया बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है, ये छोटे मोटे एरिया को कवर नहीं कर रहा होता है, ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है उसको कवर कर रहा होता है। और अगर हम देखें तो अगर इसका एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर्स के एरियाज को ये कवर कर रहा होता है, और एज अ रिजल्ट ये बहुत बड़े एरिया के अंदर में एक मीजो क्लाइमेटिक इंपैक्ट या एक क्लाइमेटिक इंपैक्ट जो होता है वो इसका देखने को मिलता है। और जिन रीजन्स के अंदर में भी ये ट्रेवल करते हैं या जिन रीजन्स के अंदर में भी ये जाते हैं वहाँ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और वहाँ की वेदर कंडीशंस जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आता है तो जाहिर सी बात है वेस्टर्लीज वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज अगर वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट की तरफ से आ रही है और वो एक लो प्रेशर आ रहा है वेस्ट की तरफ से, तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो यहीं से एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कहा? बिकॉज फ्रॉम द वेस्ट, ओके, अ लो प्रेशर एरियाज generates, and these low pressure areas under the influence of the westerlies and also under the influence of subtropical jet streams, they reaches to the India or Indian region, northern part of the India, and they brings a rainfall. Now these are, as they are low pressure areas, so the another word that we use for a low pressure area is a disturbance, okay, and as they are coming from the west, so they are to be called as a western disturbance or the disturbance coming from the west, okay, and I hope this is now clear for you to understand further concept. अभिनाश नायक और भी कोई स्टूडेंट है अगर वो अपने पॉइंट्स को डालना चाहता है तो वो अपने पॉइंट्स को डाल सकता है। ओके, सो मुझे आप बताइएगा कि जिन लोगों ने अभी अटेंड करा है मुझे आप बताइएगा कि हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने डिस्कस करा कि साइक्लोन्स कितने तरीके के होते हैं, हमने ये डिस्कस करा, और दोनों तरीके के साइक्लोन्स, जो थर्मल साइक्लोन्स होते हैं और जो डायनेमिक साइक्लोन्स होते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, और उनका जो बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बेसिक डिफरेंस आपको यही देखने को मिलता है कि जो थर्मल साइक्लोन्स होते हैं वो जनरली सी के ऊपर जनरेट होते हैं, जब सी सरफेस टेम्परेचर जो होते हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में आपको इन्फ्लुएंस ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है, और ऐसी कंडीशंस के अंदर में जो साइक्लोन्स जनरेट होते हैं उसको जनरली हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। और दूसरी हमने कंडीशन ये देखी कि जहां पर वी हैव सीन द सेकंड कंडीशन इन विच द साइक्लोन्स आर जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट एयर मासेस, of different nature in terms of density, temperature. Okay, they vary in terms of density and temperature, and one air mass pushes the other. So then also a low pressure conditions develop, and that low pressure conditions again in the temperate regions are called to be as a temperate cyclones. Now these temperate cyclones are in the path of westerlies. They are in the path of the westerlies, and westerlies are relatively warm winds because they are bringing the heat of the tropical areas towards the temperate latitudes. So they are relatively warm winds, and they come in the path of the westerlies, and therefore they are influenced by the westerlies, or you can say they are modified by the westerlies, and by the time they reaches the India, okay, by the time they reaches to the regions of the northern India, they do not have much strength, and means they reaches to their end stage, because every temperate cyclone has a stages in which they are formed.
So they will be in a juvenile stage, they would be in a mature stage, or there could be a stage which could be, you can call it to be as a and stage, in which they have reached to the climax of their building, or the climax of their process, which has resulted into their formation, and as a result they will be reaching to the Indian region relatively in a stage when they are not when they are having a lesser amount of the precipitation, and they tend to drop the precipitation into this entire region in which they are traveling. Now let's have a look to the some figures here. We will have some look to the some figures here, and that will be easy for you to understand the concepts. Okay, so let's take some figures. Now these are the western disturbances, and this is how we tend to represent the western disturbances. They are originating from the Mediterranean Sea, they are passing over to the Caspian Sea, the regions of the Iran, and then they are reaching to the crossing the Pakistan, and then they are reaching to the northern part of the India and bringing a rainfall. Okay, so these are all the disturbances coming from the west. Okay, now always remember, because discussing a temperate cyclone or explaining about the temperate cyclone is a complete topic. So, but always remember that this is a type of a temperate cyclone which reaches to the Indian region in its end stage. Now, another one that you can see here in the case of western disturbances, that this is also another graphic which I have bring in front of you, that these are the western disturbances. These are the disturbances coming from the west, and they are also influenced by the winds which are coming from the Arabian Sea. Okay, the winds from the Arabian Sea may be filling up the gap which we get as a result of low pressure systems, and these gaps are filled, and then these westerlies are likely to these winds from the Arabian Sea are likely to bring some thunderstorms or a form of a snowfall, or in the regions of in some regions of Himalayas they would be having a more disturbances, and they would be having a more effect. Okay, so in this case we can take the another one. Okay, another diagram that you can take. I have taken all these diagrams from Google, and I can see that there are some beautiful diagrams available. Now you can see that these are the cyclones which are originating from the Mediterranean Sea, picking up the water from they also originate near the Black Sea also. They also originate, they have an influence of a Caspian Sea also, because these water bodies makes them to collect the water, because they would be collecting the water from these water bodies, and then finally they would be reaching into the northern part of the India, and maybe influencing this complete regions of Punjab, Haryana, Western UP, and the Himalayan belt, which includes Uttarakhand, Himachal Pradesh, and the regions of Jammu and Kashmir. Okay, now you can see this is how they are coming. Now always remember that there is a word that is used in the case of a western disturbance, that it is not a single disturbance. Always remember that it is not at all a single disturbance that we will say. It is a family of disturbance. It is a family of disturbance, and they comes in a family. Okay, so once you have received a particular western disturbance, then it may be followed by the another one, then the second one, means it will be followed in a certain sequence. Okay, because you will start experiencing this western disturbances from the month of the October, because from the month of the October sometimes you will find that there is a enhanced precipitation. Okay, and the rainfalls in the northern part of the India are exceedingly more in comparison to the other years. So that may be the indicative of a intense western disturbances, because in the month of the October in the northern part of the India we are not likely to experience a monsoonal rainfall. So in that situation, if there is an enhanced precipitation in the month of the October, because last year in 2022 there was an observation that the October was relatively much rainier in comparison to the last 15 years. So all these were explained in terms of the western disturbances, because whenever the western disturbances are very intense, or whenever the western disturbances brings they have intense pressure systems, and they do not loses their strength even after even after traveling a longer distance. Okay, because generally what happened,
that western disturbances loses their strength by the time they reaches the northern part of the India. Okay, but sometimes they consist of it is a very high pressure systems, and these high pressure systems maintain their strength even after crossing a longer distance and reaching to the India and bringing a good rainfall. Okay, so these western disturbances, always remember, they start from the month of the October and they will be seen by the month of the April. So October, November, December, January, February, March and April. And in every year you may be experiencing at least 2 or 3 in every month, sorry, you will be experiencing from October to April. You are likely to experience minimum 1 or 2 types of the western disturbances, but in some months it may cross up to 6 to 7 disturbances, or in some months it may be just a single disturbance that you will experience. Okay, so always remember that these western disturbances comes in a family. Okay, it is not a single disturbance which will come. One will come and then it is to be followed by the another one, and then it is to be followed by the third one. They comes in a family. Okay, and that is why in most of the cases the temperate cyclones are generally termed to be as a cyclone family. This is a family cyclone, means cyclone family इसलिए भी कहा जाता है because every cyclone which is behind a particular cyclone. Suppose we take this cyclone third and we take a second cyclone, then the second one is going to be relatively younger, okay, than the cyclone which is at some more distance, which is forward to it. Okay, so always remember that they comes in a family. And why they are called to be as a family? Because the cyclones which is in the end of the trail, the cyclone which is at the end of the trail would be relatively older, and the cyclone which is in the last of the trail, or the cyclone which is in the beginning of that trail, would be relatively younger. Okay, so they have a family of grandparents, they have a family of means parents, or they may be having a family of kids also. So the cyclone which is younger one would be relatively behind, and the cyclone which is relatively older and mature would be relatively much ahead to this entire trail of the cyclone. So they comes in a family. That is also an important point, and that is very important that you should keep these concepts in your mind so that the concept should be clear. Okay. Now remember that why we are discussing this topic, and now there is a very important one, the why we are discussing this topic. The topic is to be discussed because this western disturbances, importance of the western disturbances can be seen in the context of importance of western disturbances. Importance of western disturbances. Western disturbances. Now we have already seen some basic concepts associated with the western disturbances, but now we need to see the importance of the western disturbances. Now first of all, these western disturbances, always remember, they do not cause much rainfall, but still whatever the rainfall they bring is highly important for the northern India. So first of all, the rainfall and precipitation. In terms of snowfall, in northern India, and obviously we will include Himalayas, northern India, and we can include Himalayas also. You can include the Himalayas also, that includes northern India. You can include the Himalayas also. The rainfall and the precipitation in terms of a snowfall in northern India, is dependent upon western disturbances. Okay, now you can here add here also a word also, winter rainfall in winter. Okay, because even in the monsoonal time, the northern part of the India, especially Punjab and Haryana, is not a good receiver of a rainfall. You don't find much higher rainfall, because even in Delhi also we are not having much rainfall. Okay, but Delhi do experiences the western disturbances, and all the regions surrounding the Delhi of which includes the regions of the Haryana, and which also includes the regions of the western UP,
that is a completely Rabi belt. Rabi belt. Rabi, you understand that the Rabi is a type of a crop which is which is sown after the monsoon period or sown into the time of the after the monsoon in the post monsoon season and just harvested before the summer season. So you may be knowing that it is harvested in the month of the March and the April. So you know about this one. And for this rainfall, this winter for this type of a crop, it is very important that we should have some rainfall in the winter period. Okay, because for maintaining the soil moisture, it is very important that we should be having a rainfall. Okay, so winter rainfall and which is important. Okay, this now you can write down the another point. This is important. This is important. This is important for Rabi crop. Rabi crop. Okay, now generally we take the cropping seasons only in terms of northern India. We don't have much changes into the seasons in the southern part of the India. So therefore, we take a less concept of this seasonal crops or the cropping seasons. Generally, the cropping seasons are generally defined in terms of a northern India. So we take a Kharif crop, we take a Rabi crop. So Rabi crop, and the most important Rabi crop is a wheat. So you know that Punjab and Haryana, all these regions are called to be as a wheat basket of India, because these are the regions which generally grow the maximum quantity of the wheat. Okay. So for a good output of the wheat, it is important that we should be getting a rainfall in the month of December, in the month of the January, so that the crops or the output would be good. So this is important for the Rabi crops. Another important aspect is that melt water of the snow contributes in the river flow, because most of our Himalayan rivers are the rivers which are generally dependent upon to the melt waters of the snow and the glaciers. And this snow and the glaciers that we have, most of the snow or the thickening of the glaciers tend to take place when we have a snowfall in the winter period. And the snowfall in the winter period in our Himachal Pradesh, in our Uttarakhand, or in the regions of our Jammu, in the regions of our Kashmir, is very much dependent upon the intensity of the western disturbances. So if these western disturbances are strong enough, they will bring more rainfall, they will bring more snowfall, and as a result of this snowfall, the melt during the summer season, this snow will melt. When the temperatures will increase, this snow will melt, and this snow will contribute into the river flow. So for maintaining the river regimes or for maintaining the flow of the river, it is very important that we should be having a good western disturbances. Okay, if not very good, it has to be maintaining an average value for year by year. Now this is also an important one. This is important for the Rabi crops. Okay, and this is also important in terms of contributing the river flow, because all the melt waters of the glaciers and the snow will ultimately going to drain into the river. Okay. Now another important point that you can add in the western disturbance means they are the disturbance. These disturbances, you will say, these disturbances also changes the stability or inversion of temperature. Inversion of temperatures in northern India, because during the winter time you will find that northern India, especially Delhi, Punjab and Haryana, tend to experience a situation of inversion of temperature, especially Delhi. And there was a question in the past also, एक बार question भी आया था past में कि भाई दिल्ली और कोलकाता और Mumbai, they have the same level of urbanization, but still the pollution problem of the Delhi की जो pollution problems हैं वो मुंबई कोलकाता के comparison में काफी ज्यादा गंभीर है और काफी ज्यादा सीरियस है.
तो उसके लिए बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि दिल्ली और आसपास के जो लैंड एरियाज हैं वहां पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशंस विंटर टाइम के अंदर में स्टैब्लिश हो जाती है। और ये जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशन में क्या होता है कि नीचे का टेम्परेचर कम होता है और ऊपर का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। और जब कभी भी कोई भी ऐसी मीटरोलॉजिकल सेटिंग क्रिएट हो जाती है, अगर कभी भी कोई भी ऐसी मीटरोलॉजिकल सेटिंग अगर क्रिएट हो जाती है तो उस मीटरोलॉजिकल सेटिंग को हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, नाउ इसको इस तरीके से समझिएगा कि मान लीजिए नीचे का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऊपर का टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी ठंडी हवा जो होगी वो ऊपर की ओर राइज नहीं करेगी, अपने आप राइज नहीं करेगी। ओके, अगर उसको राइज कराना होगा या हमें उसको अगर राइज कराना होगा तो फोर्सफुली राइज कराना होगा, और इस कंडीशन को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब जब एयर के अंदर में डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा या एयर के अंदर में कोई तरीके का मूवमेंट ही नहीं होगा, वर्टिकल मूवमेंट ही नहीं होगा, तो नीचे की लेयर नीचे ही रह जाएगी और ऊपर की लेयर जो होगी वो ऊपर ही रह जाएगी, जिसकी वजह से जो भी पॉल्यूटेंट्स होंगे वो सारे के सारे यहां पे ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं और पॉल्यूशंस होते हैं, और ये पॉल्यूशंस एयर करंट्स जो होती हैं वो अपर लेयर के अंदर में ले जाती है। लेकिन अगर एयर करंट्स अपर लेयर के अंदर में जा ही नहीं पा रही हैं, मतलब there is no means there is a barrier for the air to rise upward, then it is called to be as a inversion of temperature, and which will actually amplify the issues of pollution in the regions of the Delhi. Okay, this is the inversion of temperature. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एयर जो होगी वो खुद राइज नहीं करेगी, एयर जो होगी वो खुद राइज नहीं करेगी, लेकिन अगर इधर से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर आ जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफी मतलब उनका मिनिमम हाइट 5 to 6 किलोमीटर्स का उनका लेवल होता है। मिडिल ट्रोपोस्फेयर के जनरली में ये फिनोमेना देखे जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि इनका कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर एंटर करता है तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या करेगा, ये एरिया क्या बन गया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का। और ये जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशन होती है इसको स्टेबल कंडीशन कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि अच्छी कंडीशन है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टेबल का मतलब अच्छे से जोड़ लेते हैं और इनस्टेबिलिटी का मतलब हम बुरे से जोड़ लेते हैं। ओके, जब भी स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तो उस कंडीशन का मतलब ये होता है कि नीचे की एयर ऊपर नहीं जा रही है, नीचे की एयर नीचे ही है और ऊपर की एयर जो है वो ऊपर ही है। ये उन कंडीशंस में भी डेवलप होता है जहां पे हाई प्रेशर होते हैं। wherever we have a high pressure zones, there also we have a situations in which the lower layers are relatively having a different temperatures in comparison to the upper layers. This point is clear, and that also may cause us factors of the stability. Okay, is it clear? Is it clear to all? So in that situation, if we have a stable environmental conditions, okay, if you have a stable environmental conditions, so in that situation the air will not rise, and अपने आप rise नहीं करेगी। अब क्या करना पड़ेगा, इस एयर को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और इसी डिस्टर्ब को करने वाले हम क्या बोलेंगे उनको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये खुद भी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि ये साइक्लोन है। साइक्लोन हमेशा डिस्टर्बेंस कहलाएगा, डिस्टर्बेंस का दूसरा नाम ही लो प्रेशर सिस्टम है या साइक्लोन है। तो जब ये यहां पे आएगा तो इस एयर को क्या करेगा, इस एयर के अंदर में एक सर्कुलेशन प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से काफी हद तक पोल्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी या जो स्मॉग से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो दिल्ली वालों के या आसपास के जो रीजन्स होंगे उनकी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो रिलेटिवली सॉल्व हो पाएंगी। ओके, एक मिनट में बच्चों एक टेक्निकल इशू है तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये चीज है। तो ये स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को अनस्टेबल बनाने के लिए भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हेल्प्स इन ब्रेकिंग द स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द दिल्ली और इन द रीजन्स ऑफ द
or in the regions of the North India. So they helps in stability or changing the stability or disturbing the stability of the or the inversion of temperature conditions of the northern India, and giving relief in northern India. That is also important. Okay, northern India, and also the dryness which is there because of the cold weather conditions. The dryness which is there, it is bit change into the moist situation. Okay, so that also brings a relief to the people of North India. Okay, now another important point that you need to keep in your mind, that nowadays it has become to be our newsmaker. Okay, it is now a newsmaker. That why Western disturbances are a newsmaker, why WD are newsmaker. Okay, why they are newsmakers now. So the reasons of their newsmaker being a newsmaker is that why we are talking about these. This is a regular phenomena, and why we are talking about this, because the rainfall through WD, matlab Western disturbance, is reducing year by year. Is reducing year by year. Is reducing year by year, and that is a cause of worry for peoples in India, or especially our Indian Meteorological Department. That is a cause of worry. But the rainfall due to Western disturbances is reducing year by year, but frequency of Western disturbances is increasing. Frequency of Western disturbances is increasing. इसका मतलब क्या हुआ कि Western disturbances, by the time they reach in our region, they loses their strength. Okay, it means that Western disturbances are losing their strength before reaching India, northern India. So we have already seen that this is an important implication for us, that if they are losing their strength, then it is carrying an important implication for all of us, especially the people of northern India. Now it is also observed by Indian Meteorological Department that the frequency of the Western disturbances are increasing, but the rainfall is reducing, and they try to relate it with the global warming, or they are trying to connect it with the global warming or increase in temperature. Okay, increase in temperature. Okay, so because just now we have seen that in the month of the February, the temperature that we are experiencing is relatively more than the temperature generally we tend to experience in the month of the March. But remember one thing, that sometimes the increase in the temperature could be a temporary phenomena or a temporary change, because sometimes what happens when any storm is going to come, especially the temperate cyclone or especially the Western disturbances, then for 2 or 3 days or 4 days there will be an increase in temperature, and it is followed by a colder weather. Okay, so जो लोग नॉर्थ इंडिया के अंदर में अभी उन्होंने टी शर्ट पहननी शुरू कर दी हैं फरवरी के महीने के अंदर में, मैं उनको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा जल्दी है, और क्योंकि ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के एक स्टेजेस होती हैं कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आने का पता भी इसी से चलता है कि एकदम से टेम्परेचर जो होता है पहले थोड़ा सा इंक्रीज करने लगता है, और फिर उसके बाद कोल्ड वेव्स जो होती हैं वो आती हैं. ओके, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको जनवरी दिसंबर की जनवरी वाली कोल्ड वेव्स आपको फील होंगी, बट यू विल बी हैविंग अ मच कोल्डर एयर. Okay, and that may be coming from the regions of the Himalayas, in these regions of the Punjab, Haryana, and in the regions of the Delhi. Okay, so ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इनका कनेक्शन टेम्परेट साइक्लोन से है, और जो हम फ्रंट थ्योरी, जो फ्रंटोजेनेसिस टेम्परेट साइक्लोन के अंदर में हम पढ़ते हैं, उसी फ्रंट थ्योरी को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं
तो हमें पता चलता है कि फ्रंट्स का लास्ट स्टेज जो होती है वो ऑक्लूडेड स्टेज होती है, और जब वो अपने ऑक्लूडेड स्टेज पे आते हैं तब जाके वो इंडिया के ऊपर दिखाई देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल इनसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो रेनफॉल होती है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो पहला तो न्यूज मेकर इस वजह से क्योंकि ये आजकल थोड़ा सा नखरे दिखा रहे हैं। ओके, और नखरे दिखाने के पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से है। अब बात ये आती है कि भैया इंक्रीज इन टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ रहा है, भाई कैसा क्या क्या हो रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए, तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा जो टेम्परेचर इंक्रीज होने का सबसे बड़ा जो आपको इफेक्ट देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर की मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, तो प्रेसिपिटेशन के चांसेस जो होंगे वो भी रिलेटिवली कम हो जाएंगे। आप इसको इस तरीके से समझिएगा, ओके, कि अगर आपके पास ठंडी चाय है तो उसके अंदर में हो सकता है आप एक ही चम्मच चीनी को डिसॉल्व कर सकते हैं, या आप घर में कभी शिकंजी, इफ यू आर मेकिंग अ लेमनेड, ओके, then you know that if you add the ice before adding the sugar, then it would be difficult for you to dissolve the sugar. Okay, so if you add the sugar in a lukewarm water and then you add the ice, then you would be able to means then it would be easy for you to dissolve the sugar, okay, before putting the ice, okay, in comparison to a situation in which you are dissolving the sugar after putting the ice. So same the case in our atmosphere, that when the temperature increases, its moisture holding capacity also increases. Okay, its moisture holding capacity also increases, and as a result it will bring less precipitation क्योंकि वो ज्यादा moisture को hold कर सकता है। और कई बार ये भी होता है कि ये भी देखा गया है कि हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो ट्रोपोस्फेयर में काफी ऊपर चले जाते हैं, मे बी एट अ हाइट ऑफ अराउंड 9 किलोमीटर्स और एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर्स। अगर इतनी ऊंचाई के अंदर में अगर साइक्लोनिक रेनफॉल हो भी रही है तो वो कभी भी सरफेस तक नहीं आएगी, क्योंकि रास्ते में ही वो कहीं ना कहीं बीच में एब्जॉर्ब हो जाएगी। मींस इट इज व्हेन इट क्रॉसेस द ड्राई एयर इन बिटवीन, then it is likely to get absorbed in the middle and it is less likely to reach to the surface. Okay, so that is also a reason. Okay, so ये चीज एक major observations है और that is why they are believed to be as a news maker. ओके, तो आज आप लोगों को इसके अंदर में हमने ये डिस्कस करा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को हमने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा कि वेस्टर्न और डिस्टर्बेंस किसको कहते हैं कि जहां पे जिसको जो एक इनस्टेबिलिटी को चेंज करे, जो एक स्टेबिलिटी को चेंज करे। और क्योंकि ये सारे के सारे जो विंटर्स के टाइम में स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस बन जाती हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर में, उस स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करते हैं, इसलिए भी इनको डिस्टर्बेंस कहा जाता है। और मीटरोलॉजी में हर लो प्रेशर एरियाज को एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है डिप्रेशन, या डिस्टर्बेंस भी एक दूसरा वर्ड है जो इनके लिए यूज किया जाता है। ओके, सो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो हमारे सारे लिंक्स हमने वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड अवर लिंक्स in this description box, and I'm a faculty here for a geography and geography GS and a geography optional, and almost taking these classes for the last 15 years, and even more than 15 years I'm guiding the students for this civil services. And आप में से कोई भी अगर ऐसा है जिसको ये लगता है कि उसको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाऊँ। ओके, और हमारी कोशिश यही है कि ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स होते हैं बहुत सारे, और जिसमें हम आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को दिखाते हैं कि उसका इलस्ट्रेशंस देते हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपके सामने, कि ताकि आप एग्ज़ाम में जाके आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ज़्यादातर सीरीज़ के अंदर में हम लोग कंसाइंस डिस्कशन करते हैं, ओके, और हम उतनी ही की ही बात करते हैं जितना आपको एग्जाम में लिखना है और जितना आप लिख सकते हो। ओके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विद्वत्ता या बहुत इंटेलेक्चुअल टच हम अपने वीडियोस के अंदर में अवॉइड करते हैं। अगर किसी को बहुत टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई और फर्दर डिटेल्स में पूछना चाहता है
तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, हम उसके लिए ओपन हैं और आप अपने डाउट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम डाल सकते हैं, उस पर भी डाल सकते हैं। हमारे कई सारे चैनल्स हैं और मैं एज अ इंडिविजुअल भी आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं जनरली यहाँ पे जीएस स्कोर पे अवेलेबल होता हूँ और आप जीएस स्कोर के रिसेप्शंस पे फ़ोन करके आप मुझसे मिलने का टाइम भी ले सकते हैं और मुझसे आके मिल भी सकते हैं। So that's all from today's lectures or today's discussion related to our ultimate analysis. And I hope I have done a justice with the today's concept. And in case if I have missed any of your doubts or any of your important area, okay, which you want to have a discussion related to Western disturbances or related to the geography. अगर आपको भी लगता है कि किसी एक टॉपिक पे आपको चाहते हैं आप कि मैं कोई वीडियो बना के या आपके साथ डिस्कशन के थ्रू आऊँ, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके उन टॉपिक्स को बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जल्द से जल्द आपके साथ कांटेक्ट पे। थैंक यू।